Hello, it is am audible? Yes, sir. Yeah, thank you, beta. Okay, the skin is visible? Yes, sir. Yes? Sir. Okay. So today we are going to start with the next module, module number 2. That is nothing but the rolling contact bearing. So from today we are going to start with this one. In previous lecture already we have completed with the design of gears. So it is going to be a rolling contact bearing. So we are going to talk about the rolling contact bearing. Yes. What is the function of the bearing? Yes, anyone? What is the function of the bearing? To reduce friction between rotating components. Yes, it's reduce the friction between the rotating components. You can say in a mechanical element, it's permit the relative motion between the two parts. Okay. If you're going to talk about the example, so it is going to be example of the shaft and housing. So when you're going to see here housing part, and here when you're talking about the shaft part, so here we need to use the bearing between the shaft and housing to get the relative motion between them. So if I am using the bearing between this housing part and we have a shaft here. So on this shaft we are making the arrangement of the bearing, and this bearing is nothing but the roller contact bearing. So if you are going to make the symbol of that, so you can find out the symbol of the roller contact bearing is like this. So it's permit the relative motion between the two parts. Its example is what housing and shaft. When we are talking about what is the function of this bearing, what is the function? Very important part. What is the function of the bearing? So you can say it's reduce the friction between the two rotating or in a fixed and rotating surface. You can say it's reduce the friction. Means friction क्या हो जाता है तुम्हारा? Friction जाता नहीं, but there is a friction with the very minimum friction. So if there is a shaft and hub के बीच में जो rotation हो रहा है वहाँ पे friction नहीं है, ऐसा नहीं है. There is a friction, but that friction is a minimum friction. There is a minimum friction. Okay, so you can say the friction is a minimum friction. Okay, now if I'm going to see here what is the next function of the bearing, anyone? See, in a first function क्या होता है, रोटेशन ऑफ शाफ्ट और एक्सल रहता है, उसमें क्या करता है, मिनिमम फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है. जो भी फ्रिक्शन ज्यादा रहेगा तो रोटेशन नहीं होगा. सो विथ हेल्प ऑफ द बेरिंग क्या कर रहे हो, बेसिकली वी आर रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन बिटवीन हाउसिंग एंड शाफ्ट. तो जैसे मैंने बेरिंग अटैच किया, इस मीन्स व्हाट, वी आर रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन बिटवीन दिस शाफ्ट पार्ट एंड हाउसिंग पार्ट. तो ये शाफ्ट एंड हाउसिंग के बीच में वी हैव रिड्यूस द फ्रिक्शन. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट फंक्शन, एनीवन? यू कैन से इट्स यूज्ड टू सपोर्ट द शाफ्ट, या एक्सेल को सपोर्ट है होल्ड करने के लिए भी हम लोग क्या यूज करते हैं, बेरिंग. मींस बेरिंग ओनली इट्स नॉट रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन, इट इज आल्सो सपोर्ट द शाफ्ट. या शाफ्ट है एक्सेल को सपोर्ट भी देता है. इट इज नॉट ओनली कि भैया फ्रिक्शन रिड्यूस करना है. सो व्हाई वी आर going with this function? Because once we know the function, then only we can go with the design. When you're talking about the supporting the shaft, means what, this bearing is going to be sustain the some load. That load is going to be transmitted from the shaft. तो ये shaft के ऊपर जो भी load आने वाला है, because this bearing is supporting the shaft, so what load is acting on the shaft is going to be transmitted to the bearing. So third function is going to be what, is take up the forces जो इसके ऊपर ट्रांसमिट होता है. तो क्या करता है ये, is sustain और take up the forces. What? When you're talking about it, take up the forces means what? If I'm taking the one shaft and this shaft is going to be supported both side with the bearing, यहाँ पे भी bearing लगा है, यहाँ पे भी bearing लगा है. So when load is going to be act on the shaft,
So suppose that if this load is W, that time this load is going to be a distribute on this bearing. This bearing, yes, that is going to be nothing but the W by 2 and W by the 2. So if I'm going to design any bearing, so what is the important part? That bearing should be sustain this much load. Otherwise क्या होगा? The bearing is going to reduce the friction, but second time जैसे इतना load आएगा, so the efficiency or bearing is going to be failed. So when we are talking about the function, so this function is belong to the designing part. So if you know the what is the first consideration, our bearing should be able to reduce the friction between the two rotating component, two housing and shaft, or to reduce the friction. And second one is nothing but the support the shaft को supports करने के लिए use करते हैं. And third one is what? Take up the forces, and that forces is nothing but the what forces is acting on the shaft, that transmitted forces is this. So if you are talking about the next part, what is the types of the bearing? If I am going to see the basic things, what are the types of the bearing? Types of the bearing. So when we are talking about the first, it's depend. When we are talking about the types of bearing or classification of the bearing, so we can say it's going to be depend on the forces. कि फोर्सेस कहाँ पे एक्ट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग यदि मैं क्लासीफाई करता हूँ. सो पहला वाला होएगा डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ forces. This is very important because when we are talking about the direction of forces, why we are going with these types of bearing? Because ये जो टाइप है इसी में से कौन कौन सा बेरिंग डिजाइन करना है, we need to check out one. So first one is nothing but the radial bearing. Radial bearing. We are going to design the first radial bearing. So what is the meaning of radial bearing? So यहाँ पे क्या होने वाला है, जो डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेस क्या रहने वाला है, रेडियल. When we are talking about the radial bearing, means the direction of force is going to be a radial. Suppose that if I am making any shaft, जो मैंने यहाँ पे एक shaft बनाया है, and this shaft is this one, and this is my axis of the shaft, and I'm just making the one bearing over here. और यहाँ पे मैंने बोला कि this consider this is something about the balls. This is a ball bearing, roller contact bearing, and if I'm talking about the direction of load is going to be this one. इस पे जो load act करने वाला है, this load is going to be this one. So when you're going to see here, this W load is acting radially inward to the bearing, and this is nothing but the my bearing, and this is nothing but the my shaft. So I can observe that this load is perpendicular to the axis of the shaft. So in this one, when we have a radial bearing, so in this one, force is acting radially inward or outward, that is depend on the condition. So here we can say कि भैया radially inward act कर रहा है, and it is again perpendicular to the axis of the shaft. So when we are talking about the second type is nothing but the thrust bearing. This thrust bearing. What is the meaning of thrust bearing? So here my load is acting along, my load is acting perpendicular to the axis of the shaft. But when we are talking about the thrust bearing, in a thrust bearing, suppose that this is my shaft, okay, and here we have a frame of the body. मतलब जिस body के ऊपर हमको ये करना है, ये मैं इसको just I'm taking the frame. This one is nothing but the frame, and I want to rotate this shaft, but a loading condition is what? Axial load. Thrust bearing is nothing but thrust load, or thrust bearing is nothing but thrust load is but the axial load. So here if I have a shaft like this shaft, so I need to make the arrangement of the bearing between the shaft and frame. तो यहाँ पे जो भी मेरा arrangement रहने वाला है, this arrangement is going to be a bearing. ये क्या रहने वाला है? This is going to be my bearing. Why we are saying it is a bearing? हम लोग इसको क्यों ऐसा bearing करके consider कर रहे हैं? Because here what load is acting, that load is nothing but the along the axis of the shaft. So when you are going to see here in a radial one, load is perpendicular to the axis of the shaft. Here load is along the axis of the shaft. तो यहाँ पे जो भी यदि मैंने इसकी जगह पे बॉल बेरिंग यूज किया और लोड अप्लाई किया ये शाफ्ट पे, तो क्या होगा? ये जो बॉल है वो बॉल और केज जो है वो बाहर आ जाएगा.
So in that time I'm not able to use this type of the bearing. I'm not able to use this type of the bearing. I can use only this thrust bearing. I can use only this thrust bearing when we have a thrust load. In a thrust load जो भी load है वो कहाँ पे transmit होएगा? It is going to be transmitted on this bearing. So here this W is going to be transmitted to this bearing. That is nothing but the function of the bearing to take up the forces. So here this bearing is sustaining our load. Also it is a help to rotate the shaft. तो यहाँ पे क्या कर रहा है, इस दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन होने वाला था उसको वो रिड्यूस कर रहा है एंड इट्स प्रोवाइड दिया मोशन बिटवीन दिस फिक्स मेंबर एंड शाफ्ट. तो यहाँ पे when we have a thrust load, that time I can use the only thrust bearing. Otherwise यदि मैं रोलर बेरिंग यूज करता हूँ that time there is a chances क्या है कि bearing is going to be a fail. Okay, and next if I'm going to categorize the bearing, so that is nothing but the very important part. That is nothing but the depending on the type and friction. ये दो पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट वन ऑलरेडी वी हैव डिस्कस व्हाट इज अ रेडियल बेरिंग एंड व्हाट इज अ थ्रस्ट बेरिंग. इज अ थ्रस्ट बेरिंग when we are going to design the bearing for the axial loading. This is a radial loading, that is nothing but when we need to design the bearing for the load is acting radially to the bearing. तो ये दोनों के साथ साथ अभी हमको क्या करना है कि भैया यहाँ पे फ्रिक्शन क्या टाइप एंड फ्रिक्शन टाइप ऑफ फ्रिक्शन के ऊपर ये लेट मी राइट दिस टाइप ऑफ द फ्रिक्शन. टाइप ऑफ द फ्रिक्शन, टाइप ऑफ फ्रिक्शन जो रहेगा उसके अकॉर्डिंग वी नीड टू डिजाइन. सो इसमें जो सबसे पहला कैटेगरी है, very important category, that is nothing but the sliding bearing. sometime इसको हम लोग जो दूसरा नाम है इसको बोलते हैं hydrodynamic bearing. So if you are going to see our next module, that next module is nothing but the hydrodynamic bearing. The next module is nothing but the hydrodynamic bearing. If I'm talking about the second, that is depend on the friction, is nothing but the रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग जो अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं. दैट इज नथिंग बट द रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग. सो already we are going with the rolling contact bearing. Once we'll complete this part, we'll go with the sliding bearing. So what is the friction part? So when you're going to see here, when we are talking about this rolling contact bearings, so the component of this roller contact bearings are basically क्या होता है, ये suppose that I'm just trying to make the one symbolic representation of the bearing, and that bearing is nothing but the roller contact bearing. Just go through this because this is very important part. Once you know the proper representation, then we can just difficult to make by this one, but it's okay. कुछ तो कुछ कर ही सकते हैं हम लोग इसमें. Just making the symbolic representation so you can see क्या कर सकते हैं इसमें. Okay, now if you are going to see here, this is nothing but my roller contact bearing. So when we are talking about the roller contact bearing, so we must know the component name. So basically जो यहाँ पे मेरा ये दिख रहा है, when we are talking about this ring, ये रिंग, दिस इज नथिंग बट द रिंग. ये मेरा क्या है, एक रिंग है. दिस इज कॉल्ड द वन रिंग. ये मेरा स्टील का रिंग दिखा रहेगी, तुमने फिजिकली देखा रहेगा बेरिंग, मोस्टली सबने देखा रहेगा आई होप कि ये बेरिंग कैसा है. तो दिस इज अ वन रेस एंड दिस इज अ आउटर रेस.
ये जो रिंग्स रहते हैं जिसके बीच में बॉल्स रहता है, बेसिकली वी आर सेइंग इट इज़ अ रेस। तो ये जो मेरा ये रेस है इसको बोलते हैं हम लोग आउटर रेसेस। ओके, कॉल दिया रेस। रिंग जो रहता है जिसके अंदर बॉल रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेस। ये जो रहता है इसको हम लोग बोलते हैं इनर रेस, दैट इज द इनर रेस एंड आउटर। एंड ये तो तुमको पता है, दिस इज कॉल्ड दियर balls। and if you are talking about to hold this ball, ये क्या होने वाला है जी, मैंने बॉल को ऐसे ये दोनों के बीच में रख दिया तो क्या होएगा, when this one ring is going to be rotated, one race is going to be rotated, तो सब बॉल एक ही साइड आके रुक जाएगा। so to hold this ball we need a cage। तो cage कैसा रहता है, I'm just trying to make the cage in outside। so this is nothing but the thin plate having the circular holes, in a circular holes, this is a circular hole। so क्या होता है, this ball is going to be fit in this race। ये जो मेरा केज है इसके अंदर ऐसा बॉल फिट है एंड बॉल इज गोइंग टू बी रोटेट इन दिस ओनली। तो यहाँ पे जो दूसरा बॉल है और ये दोनों के बॉल के बीच में क्या रहने वाला है, दैट पर्टिकुलर डिस्टेंस इज गोइंग टू बी मेंटेन। नहीं तो क्या होगा, व्हेन आई एम नॉट यूजिंग दिस केज, सो क्या होगा, व्हाइल द रोटेशन, व्हाइल द ट्रांसमिशन, दिस ऑल बॉल इज गोइंग टू बी कम इन वन साइड, एक दूसरे को टच होकर एक जगह पे आ जाएंगे। सो और फ्रिक्शन इज गोइंग टू बी इंक्रीज। So basically when we are talking about this roller contact bearing, this roller contact bearing में क्या है, the rolling element ball, ये अभी यहाँ पे क्या है, मेरा element is a ball, rolling element is a ball। sometime ball की जगह पे, balls की जगह पे we are using the rollers, that is depend on the radial load, जो load conditions है उसके ऊपर मेरा depend करता है, it is going to be a ball bearing or it is going to be a needle bearing। okay, so here this is a called the rolling contact bearing because here this roller or balls is going to be create the friction or it's going to be reduce the friction। मैं create क्यों बोला, because there is some friction is there, that minimum friction is there, then only this rotation is possible। so here this come under the rolling contact bearing। now simply when we are talking about the next part, that next part is nothing but the hydrodynamic bearing। so hydrodynamic bearing एक बार देख लेते हैं। when you are going to talk about the hydrodynamic, so suppose that if we have a arrangement of the hydrodynamic bearing, so I'm just trying to make the hydrodynamic bearing here। it is very important part, तो just be attention कि भैया क्या कर रहे हैं, क्या वर्किंग कैसा है, we need to go with that। यहाँ पे आई एम जस्ट चेंजिंग द सेंटर लाइंस, ये मेरा ऐसा है एंड इसके अंदर ऐसा है। एंड इफ आई एम गोइंग टू सी हियर, आई एम गोइंग टू मेक यू वन मोर सर्कल। now and after that I'm just trying to make the one more circle। okay, if you're not getting any point then please ask me। I'm just making the rough diagram। okay, so here we have a 2-3 parts and that parts are very important। basically when we are talking about this hydrodynamic bearing, sometimes we are saying sliding contact bearing, hydrodynamic bearing, general bearing भी बोलते हैं इसको। what is important part, this component is nothing but the shaft, ये मेरा shaft है and this is nothing but the hole, जैसे normal housing you can say, in that housing or this shaft is going to be rotated। so basically you can say this is nothing but the my housing part। okay, so here our shaft is going to be rotated, our shaft is going to be a rotate। ये मेरा क्या होने वाला है यहाँ पे, if I am going to make the center line of this shaft, so it is one and this shaft is going to be rotated। so basically between this shaft and housing we have a lubrication। यहाँ पे क्या रहता है, we have a lubrication film। यहाँ पे क्या रहता है, we have a lubrication film। so this is going to be covered with the
lubrication. So when we are in a stationary condition, so that time we have a such type of arrangement. Now when our shaft will start rotating, system में जब मेरा shaft start करेगा rotate होना, so after rotating slowly, the center of the shaft and center of the housing is going to be matched. Means this shaft is going to be moved upward direction. When this shaft is rotated, in this portion, यहाँ पे क्या होने वाला है? This wedges is going to be formed. That wedges is going to be formed, and that wedges help to shaft to shift their center from this point to this point. So if I am talking about this is a O, if I am talking about this is nothing but the O center, this is a O center and this is O dash. So when our shaft O dash का center will start करेगा rotate करने, and here the wedges will form. This wedges lift the shaft, and this O dash and O is going to be overlap, and this shaft start rotating at the center. So basically when shaft is going to be lift and reaches to the O, so we'll get the uniform film thickness around the shaft. So here this type of bearing is called the hydrodynamic bearing. Why it is a hydrodynamic bearing? Because here hydrodynamic forces helps the shaft to lift from O dash to O. So जो यहाँ पे hydrodynamic forces generate हो रहा है due to this wedges, so that hydrodynamic forces is lifting the shaft from here to here. So यहाँ पे जो dynamic forces actually wedges के through क्या कर रहे हैं? Lift कर रहे हैं this shaft को from here to here. So when we are talking about the application, already we have discussed about the application of the hydrodynamic bearing, जहाँ पे मेरे को हाई स्पीड रिक्वायरमेंट है, लाइक टर्बाइंस, आईसी इंजन में टू कनेक्ट दी कनेक्टिंग रॉड एंड क्रैंकशाफ्ट अटैच करने के लिए जो ये पोर्शन रहता है तुम्हारा है, दिस इज नथिंग बट द नीचे वाला कैप कनेक्टिंग रॉड का, एंड दिस इज द अपर पोर्शन ऑफ द कनेक्टिंग रॉड. सो वी आर एडिंग एंड ये यहाँ पे क्या करते हो? कनेक्ट करते हो. यहाँ पे जो शाफ्ट रहता है, दैट शाफ्ट इज नथिंग बट द क्रैंक शाफ्ट, and this rod is nothing but the connecting rod. So between this we are using this such type of arrangement. This is nothing but the hydrodynamic bearing. So here जो ये shaft रहता है क्रैंक शाफ्ट, और इसके बीच में जो फ्लूइड रहता है, वो फ्लूइड कौन सा रहता है? आईसी इंजन में जो तुम तो ऑयल डालते हैं, ऐसे W40 है, W40, whatever you are to what you are inserting, that lubrication is there, and that lubrication help to provide the bearing effect between this shaft and housing. So here this portion is going to be a housing and this portion is going to be a shaft. तो यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट होने के लिए we are using the hydrodynamic effect. Similarly, sometimes someone will ask what is the meaning of hydrostatic bearing. So that hydrostatic bearing, यहाँ क्या करेंगे? We'll make the arrangement. I'm just making the rough diagram. Hydrostatic bearing का to get the idea regarding this one. So suppose that I have this housing part, this is my housing part, here I have a shaft, so this is a shaft. So when we are talking about the hydrostatic bearing, so we need to provide the here one pump. यहाँ पे क्या होता है? Pump use करते हैं. So pump is going to be a send the pressurized lubrication. ये lubrication क्या करेगा? Lift the shaft, and then shaft का center और housing the center is going to be meshed and will get the uniform film thickness around the shaft. Initially, when our system is at the stationary condition, so we'll get the direct contact between the metal to metal, that is nothing but the shaft or general shaft and housing is going to be in a contact. जो hole है तुम्हारा या housing है, that is going to be contact with the shaft when our system is a stationary system. So when our system start rotating, here we'll get the dynamic forces, and that dynamic forces help to shift this journal, to shift the shaft. इस shaft को journal भी बोलते हैं, तो it's help to shift the journal और shaft to the origin. and यहाँ पे क्या होता है? film thickness uniform maintain होता है. ये कहाँ पे यूज करते हैं? जहाँ पे मेरे को हाई स्पीड रिक्वायरमेंट है, because in place of sliding contact bearing, if I'm using the roller contact bearing, so it is going to be a worn out very fast, and we need to replace every time. Sometimes it is not possible to replace the bearing frequently. So in that cases, we are using the hydrodynamic bearing. Life of hydrodynamic bearing is very higher than the roller contact bearing. Okay? Yes. Please let me know if anyone is having any doubt regarding this hydrodynamic bearing
and hydrostatic bearing. If you are having any doubt regarding the working of the hydrodynamic bearing and hydrostatic bearing, please ask me. This is very important part. Already you have go through with the this one. ये already तुम इसके through गए हुए हैं. Important part what sliding bearing, hydrodynamic bearing का working में किसी कुछ doubt है क्या? Very easy working. क्या होने वाला है, ये शाफ्ट सिर्फ रोटेट होना चालू करेगा. ये यहाँ पे ये जब रोटेट आना चालू होगा तो ये पोर्शन में दैट दे विल सिस्टम इज फॉर्म दी वेज, जो तुमने वेज एंड ब्लॉक फर्स्ट ईयर में स्टडी किया है. सो दैट वेज जो फॉर्म होएगा यहाँ पे, दैट वेज इज गोइंग टू बी ट्राई टू लिफ्ट दिस शाफ्ट. तो स्लोली स्लोली जैसे स्पीड इंक्रीज होते जाएगा, दैट वेजेस इज गोइंग टू बी इंक्रीज, एंड आफ्टर सम टाइम दिस शाफ्ट इज गोइंग टू बी रीचेस टू दिस सेंटर and will get the uniform film thickness around the shaft, and there metal to metal contact. Initially, is a metal to metal contact in our system is stationary. If you are talking about the sliding contact bearing, in a sliding contact bearing, every time you are going to check the contact of the metal to metal. If there is a metal to metal contact, then our system is going to be failed, because when we have a metal to metal contact, so definitely friction will be high, the wear will be high. So when we are going to design the hydrodynamic bearing, always we are going to check the thickness, film thickness. यहाँ पे जो film, yes. सर एक बार मतलब बता सकते हो वो फिल्म थिकनेस मतलब कम क्यों नहीं होगा? लाइक अगर रोटेट हो रहा है तो वो मतलब वहां से लिक्विड लीक हो सकता है ना? कहाँ से बेटा? जो हाइड्रोडायनेमिक बेयरिंग है बीच में फ्लूइड रहेगा, राइट? यस, यहाँ पे. हाँ हाँ, तो वो फ्लूइड लीकेज मतलब कैसे प्रिवेंट करते हैं? यस, अभी देखो बेटा क्या होता है, इट्स डिपेंड ऑन दियर टाइप ऑफ दियर सिस्टम. नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बेटा कि आईसी इंजन में जो ये पोर्शन रहता है, ये वाला पोर्शन, वो किस में रहता है बेटा? इट्स ऑलरेडी डीप इन लुब्रिकेशन. हाँ, लुब्रिकेशन फ्लूइड में. सी मुझे क्या मेंटेन करना है कि जब ये स्टेशनरी कंडीशन में रहेगा तो ये सरफेस कांटेक्ट रहेगा, ठीक है. सिर्फ हाँ. रोटेट होने के टाइम पे ये मूव होके यहाँ पे आ जाए और यहाँ पे फिल्म थिकनेस आ जाए, इतना ही मुझे मेंटेन करना है. यहाँ तो मुझे लीकेज ही चेक नहीं करना है. अच्छा. हाँ हाँ. दिस सिस्टम इज इनसाइड द लुब्रिकेशन. ओके. तो जहाँ पे मतलब ऑलरेडी लिक्विड लुब्रिकेंट है वो एज अ हाइड्रो मतलब एज अ फ्लूइड एक्ट करेगा वही बेरिंग्स के बीच में. तो वैसे सिस्टम में हम लोग ये वाले बेरिंग्स यूज करते हैं. यहाँ पे जो भी हम लोग एसएई का जो भी लुब्रिकेशन यूज करते हैं वही लुब्रिकेशन यहाँ पे एज अ लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज करता है. सपोज दैट इफ यू हैव एनी सिस्टम जहाँ पे ये यही है, तो क्या करेंगे, वो सिस्टम का जो बेरिंग पोर्शन वो एक बॉक्स में रहेगा और उस बॉक्स में लुब्रिकेशन रहने वाला है, एंड दैट बॉक्स इज गोइंग टू बी फिल्ड विद द बुशेस. ओके. मैं ऐसा नहीं कर सकता बेटा. हाइड्रोडायनेमिक्स में क्या होने वाला है, देयर इज अ लुब्रिकेशन, बट ड्यू टू इनिशियल स्टेशनरी कंडीशन में मेटल टू मेटल कांटेक्ट रहने वाला है, वो आगे होगा तो यूनिफॉर्म है. मतलब ये रोटेट होते होते ये जो तुम्हारा सिस्टम है, ये शाफ्ट यहाँ पे आ जाएगा और ये तुम्हारा जनरल रहने ऐसा. तो ही मेरा क्या होएगा, ये सब मेरा लुब्रिकेशन हो जाना है. मैं इतना बड़ा गैप बता रहा हूँ बेटा, इतना गैप रहता नहीं, वो सब बहुत कम रहता है. माइक्रोन्स में भी आते हैं वो वैल्यूज. अच्छा, ठीक है सर. ये अर्ली रिप्रेजेंटेशन इतना बड़ा फिल्म है, सर इतने बड़े फिल्म में जैसी लोड आएगा तो क्या होएगा, लुब्रिकेशन तो बाहर ही आने वाला है. बाहर आ जाएगा. करेक्ट. राइट. व्हेन लोड इज गोइंग टू बी एक्ट ऑन दिस शाफ्ट, तो यहाँ पे लुब्रिकेशन तो बाहर ही आने वाला है. सो दैट फिल्म थिकनेस इन माइक्रोन्स. ठीक है सर. And we have to check that ki hai ki nahi. So that is the next model. We'll go one by one. But what is the main concentration in this model is a roller contact bearing. So here friction is going to be reduced by these rollers. यहाँ पे friction is reduced by this lubrication. जो lubrication है उससे हम क्या करें, friction reduce कर रहे हैं. So this two types of bearing we are going to study in this course. Okay. Now before going to the next part, that is nothing but the what is static load carrying capacity in a roller contact bearing, because basically हम लोग क्या बात कर रहे हैं, we are talking about the rolling contact bearing के बारे में बात करें. तो there is a two important term in a rolling contact bearing. On basis of this one we are designing the ball bearings. तो पहला जो होता है that is nothing but the static load carrying capacity. पहला, what is a static load carrying capacity. Second part is nothing but the dynamic load carrying capacity.
ये दो टर्म हमको पता होना चाहिए, ठीक है, ये दोनों टर्म मुझे पता होना चाहिए कि क्या होता है। यस, इसके बाद ही हम लोग क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। बिकॉज व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट कि भैया ये मेरा शाफ्ट है एंड दिस शाफ्ट इज कनेक्टेड विद दियर बेरिंग्स, यहाँ पे बेरिंग्स, यस, एंड ऑन दिस शाफ्ट वी हैव दिस लोड, ये शाफ्ट के ऊपर मेरा लोड है। तो ऐसा तो नहीं है कि ये जो लोड है सिर्फ डायनेमिक कंडीशन में एक्ट कर रहा है, ये लोड तो जब सिस्टम स्टेशनरी है स्टैटिक कंडीशन में तो भी ये लोड बेरिंग के ऊपर एक्ट कर रहा है। सो इट डजंट मीन कि भैया मुझे सिर्फ रोटेटिंग कंडीशन में ही बेरिंग डिजाइन करना है, रोटेटिंग कंडीशन में बेरिंग डिजाइन हुआ तो स्टैटिक कंडीशन में फेल हो जाएगा। सो वी नीड टू चेक दिस बोथ द पैरामीटर्स, स्टैटिक लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द बेरिंग, कि भैया बेरिंग स्टैटिक लोड कितना कंसिडर कर सकता है, कितना सस्टेन कर सकता है, and after we need to check their dynamic load carrying capacity. So डायनेमिक लोड कैरिंग कैपेसिटी का बात आता है तो बोलते हैं जब भी डायनेमिक का हम लोग बात करते हैं उसमें हम लोग बात करते हैं फटीग एनालिसिस, एंड दैट फटीग एनालिसिस इज particular failure of the system, particular failure of the bearing while they are working condition. And with help of that, when we are talking about the fatigue analysis in design में क्या basic consideration, when we are talking about the fatigue analysis, so with help of the fatigue analysis we are trying to calculate the life of the component. So यहाँ पे हम लोग डायनेमिक लोड निकालेंगे, डायनेमिक लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या है इसका, उसके साथ ही हमारा क्या पता चलेगा, क्योंकि डायनेमिक निकालना है मतलब वी आर गोइंग विद द फटीग एनालिसिस, फटीग कर रहे हैं तो मतलब वी आर एबल टू फाइंड आउट द लाइफ ऑफ द बेरिंग। सो इन दिस फुल मॉड्यूल और फुल फोकस इज गोइंग टू बी अराउंड द लाइफ ऑफ द बेरिंग, लाइफ ऑफ द बेरिंग। मैंने बोला ये लेके जाओ इतना दिन चलेगा, इतना लाइफ चलेगा, तो लाइफ इज गोइंग टू बी अ पेपर। अब सर लाइफ मतलब क्या, अभी मैं लेके आया उसको 24 आवर्स रन कर रहा हूँ और कोई 5 घंटे रन कर रहा है, तो दोनों का बेरिंग का लाइफ सेम थोड़ी रहने वाला है। सो अगेन दैट लाइफ इज गोइंग टू बी डिपेंड ऑन दी मिलियन रोटेशंस, कि कितना मिलियन रोटेशन के बाद ये बेरिंग को यू नीड टू रिप्लेस। जैसे तुम जाते हो गैरेज में कार लेके तो बोलते हैं अभी सर आपका बेरिंग का टाइम का, तो तुम बोलते हैं अरे अभी तो खराब नहीं हुआ है, नहीं सर अभी उसका शेड्यूल हो गया है। सो हाउ दे आर डिसाइडिंग कि हाँ इतना टाइम हो गया, इतना किलोमीटर हो गया, सो इट्स टाइम टू रिप्लेस द बेरिंग। दैट इज अ every bearing having their life. So in this full chapter 90% time we are going to find out the life of the bearing, that is nothing but the dynamic analysis. Okay, anyone is having any doubt, please ask me. Yes, any doubt? No sir. No, just minute. Chat box. Yes, everyone just go to the chat box. Already we have discussed about the module 1, so this is a module 1 final quiz. I hope everyone received the form link. There is a total 10 marks question, total question is 7, you will get the 10 marks. Right now it is at 11:57. After 12:07 this link is going to be deactivated. I hope I am audible. मिला सबको लिंक? Yes? Yes, sir. Yes. This is a module 1 quiz. You can say final quiz of this chapter. First module का final quiz है ये.
At 12:07, link is going to be deactivated.
Yes, please submit on time. एक्सटेंशन नहीं मिलेगा कोई टाइम का. Yes, last minute. Yes, last minute. I'm going to disable the link. Yes, please submit fast. Yes, now it's time to disable. किसी का है क्या अभी सबमिट करने को? Do it fast. Okay. Now we'll start with your lecture. Let me share the screen again. Okay. So here we are talking about here static load carrying capacity and dynamic load carrying capacity. What is the meaning of static load carrying capacity? When our load is going to be act on the system, that load is going to be transmitted to this bearing. And suppose that if you have a simply separated type of the shaft, simply separated type of system, and load is acting at the center, so definitely here load is going to be transmitted W by 2 and W by 2. So because of this W by 2, if this bearing, yes, please mute your mic everyone, W by 2. So because of this W by 2, because the W by 2, the deformation in the balls or rollers or deformation in the races. So check that कि भैया जो लोड एक्ट कर रहा है, because of that load any permanent deformation is occurred on the ball or races. If there is any permanent deformation, so we need to list that deformation, and if that deformation is equal to, means हमको क्या करना है कि जो deformation है that deformation should not be greater than, and ये कितना होना चाहिए deformation, that eligible या acceptable deformation should be a 0.0001 times of diameter of the ball. Okay, so if I'm designing the roller contact bearing, so initially we need to check that what bearing you have selected for the system, that bearing is able to sustain that particular load. How we are going to find that? Once you are going to select that bearing, so you'll get the all the details regarding the bearing from the PSG. Once you get the detail of the PSG, including the ball diameter. So once you know the ball diameter, so with help of that ball diameter, you need to find out their maximum deformation. Maximum deformation क्या होगा? इसके equal में आएगा, so that deformation is acceptable. If that deformation is greater than this one, so that deformation is not consideration. So in static load carrying capacity, when our system is at the stationary condition, so that time what corresponding load sustain करता है without permanent deformation.
if there is a permanent deformation, that permanent deformation should not be a greater than this one, and yes, equal रहेगा, that is acceptable. But if it is a deformation is greater, so that bearing is not going to be suitable for the given system. So everyone is getting this point. What is the meaning of rolling contact bearing? Means static load carrying capacity. Yes, anyone is having any doubt regarding this one? स्टैटिक मतलब ये खड़ा है, उसके ऊपर लोड डालो और डिफॉर्म नहीं होना चाहिए, यदि डिफॉर्म भी हुआ तो इससे ज्यादा डिफॉर्म नहीं होना चाहिए. सो हियर यू कैन से व्हाट इज दिस डी. This d is nothing but the ball or roller diameter or roller dia. जो भी डिफॉर्मेशन रहेगा दैट शुड बी इक्वल टू दिस 0.001 टाइम्स ऑफ डी. यदि इतना डिफॉर्मेशन होता है, दैट डिफॉर्मेशन इज गोइंग टू बी एक्सेप्टेबल. सिमिलरली we can go with the dynamic load carrying capacity. In a dynamic load carrying capacity means what? We are going to decide the dynamic load carrying capacity on the basis of the fatigue analysis. So in a fatigue analysis, what is the thumb rule of the fatigue analysis? We are going to run the system on given particular load. जो भी मेरा standard load है, on that particular standard load के लिए, for the that particular number of revolution के लिए, या particular working hours के लिए, जो भी मेरा रिक्वायरमेंट है. when you are going to talk about it, so what is the fatigue analysis? so अभी जितना भी स्विचेस आता है, फैन आता है, सबका कुछ ना कुछ लाइफ ऑलरेडी डिफाइन रहता है कि भैया हम इतना ही वारंटी देने वाले हैं, इससे ज्यादा वारंटी नहीं देने. हाउ दे आर कैलकुलेटिंग? they are doing the fatigue analysis on that particular component, and with help of that fatigue analysis they are calculating the lump sum wala life. So similarly here we are going to do the fatigue analysis to get their dynamic load carrying capacity. In this one we are going to define कि भैया ये bearing के ऊपर इतना load act होने वाला है. Yes, so I am going to apply that much load on that bearing and I am going to run that bearing. So again we have a two criteria. One is what? Number of revolution. यदि उसने number of revolution define किया है, so I am going to run that bearing on that particular number of revolution. If they have defined the working hours, so I am going to run that bearing to the particular hour. Yes, we have a conversion formula कि भैया नंबर ऑफ रिवोल्यूशन दिया है, सो आई कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स. इफ नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स दिया है, सो आई कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन. सो एक दिया हुआ है, दूसरा आई कैन फाइंड आउट. वी हैव दैट फॉर्मूला. सो जो भी दोनों में से दिया हुआ है, दैट पर्टिकुलर रोटेशन और पर्टिकुलर टाइम के लिए वी रन द सिस्टम. इफ आई एम रनिंग दैट द बेयरिंग ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम and if I have found any evidence of the crack or any evidence of the failure, so we can say कि भैया जो मेरा डायनेमिक लोड कैरिंग कैपेसिटी इस बेरिंग के लिए है वो मेरा सुटेबल नहीं है, मतलब इतने टाइम के लिए ये बेरिंग तो चलने वाला नहीं है. If our requirement is what? Our bearing should sustain the 500 Newton load for the 4 hours, and I have applied that 500 Newton loads on the bearing. I run the bearing for the particular 4 hours के लिए. So before that 4 hours I am getting the some evidence of the crack or some evidence of the failure. It means what? Our bearing is not able to sustain that dynamic load for the given period. So that bearing is going to be a fail in a dynamic load carrying capacity. Now second parameter is what? When we are talking about the dynamic analysis of any component, dynamic analysis of the any component on the bearing. तो बेरिंग पे जब भी हम कोई भी डायनेमिक एनालिसिस करते हैं, डायनेमिक लोड कैरिंग कैपेसिटी एनालिसिस परफॉर्म, सो दैट टाइम इट इज नॉट पॉसिबल टू परफॉर्म ऑन दी वन बेरिंग. एक बेरिंग पे परफॉर्म करूंगा, सो इन दैट केस आई एम नॉट गेट दी प्रॉपर रिजल्ट. मैंने क्या किया? For this dynamic load, I have selected the shaft, I have selected the bearing. On their bearing, I have applied the load of 500 Newton and I run the bearing for the 4 hours. So भी क्या होएगा? I am not going to get the failure condition. जो भी रहेगा मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है. मतलब क्या होएगा कि ये एक बेरिंग से मैं डिफाइन ही नहीं सकता कि ये बेरिंग इसके लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि बेरिंग का भी बहुत टाइम पे इनिशियल फेलियर या इनिशियल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. तो ऐसे टाइम पे बेरिंग के लिए मैं एक कंपोनेंट पे ऑपरेशन परफॉर्म करके, एक कंपोनेंट पे डायनेमिक लोड कैरिंग कैपेसिटी परफॉर्म करके, आई एम नॉट एबल टू डिफाइन दैट बेरिंग कि भैया बेरिंग चलेगा ही चलेगा, ऐसा मैं नहीं कर सकता. इसके लिए वी आर यूजिंग द टू डिफरेंट मेथड्स. दो अलग अलग मेथड है. एक हम लोग बोलते हैं एवरेज लाइफ मेथड. एक होता है एवरेज लाइफ मेथड. सेकंड होता है मेरा लाइफ
लाइफ दैट 90% ऑफ बेरिंग, या इसको तुम बोल सकते 90% ऑफ बेरिंग, या इसको हम लोग और डिफाइन करते हैं L10 से। इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। इनिशियली L10 एंड 90% ऑफ बेरिंग दोनों एक ही है। कैसे एक है, विल डिस्कस लेटर, बट इनिशियली हियर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एवरेज लाइफ मेथड एंड लाइफ फॉर द 90%, तो ये दोनों में क्या करते हैं, सपोज दैट इफ आई एम टेकिंग 100 सेट ऑफ द बेरिंग, एक 100 सेट ऑफ बेरिंग ले लिया मैंने, 100 सेट ऑफ बेरिंग लिया, and on this set of 100 bearing, ये 100 set of the bearing लिया, and on this 100 bearing I am going to apply the same load, I am going to apply the same load, and after completion of the 4 hours जो मेरा requirement था, 4 hours complete होने के बाद with the particular 500 load के बाद मैंने 500 के लिए रन किया, 500 न्यूटन लोड के लिए दैट पर्टिकुलर रिवोल्यूशन ऑफ पर्टिकुलर आवर्स के लिए रन किया, दैट पर्टिकुलर स्पीड के साथ रन किया, और वो टाइम खत्म होने के बाद आई एम गोइंग टू चेक दिस 100 बेरिंग्स। इफ आई एम गेटिंग आउट ऑफ दिस 100 बेरिंग 90 बेरिंग सक्सेसफुली, 90 और मोर देन 90, सो आई एम जस्ट कंसीडरिंग हियर 90 बेरिंग, 100 में से 90 बेरिंग इज completed this criteria successfully, means they have run with the 500 newton load के साथ with the particular time with the particular speed, but that component is not going to be a failed. So वो टाइम में क्या बोलते हैं कि, और जो सेकेंड क्राइटेरिया है लाइफ ऑफ 90% वो मेरा अचीव हो गया। तो इस टाइम पे हम लोग क्या बोलते हैं कि डायनेमिक कैपेसिटी जब भी हम कंसीडर करते मैक्सिमम जितना भी इंडस्ट्री है वो ये वाला ही क्राइटेरिया लेके चलते हैं कि बेरिंग शुड सेटिस्फाई दी 90% क्राइटेरिया। 90% क्राइटेरिया जो है वो क्या है, 90% लाइफ ऑफ द बेरिंग क्राइटेरिया। 90% ऑफ द बेरिंग क्राइटेरिया क्या बोलता है कि भैया जितना भी बेरिंग लगाए उसका 90% बेरिंग सक्सेसफुली तुम्हारा अचीवमेंट करना चाहिए रिक्वायरमेंट, तो वो बेरिंग सुटेबल है। क्योंकि हम लोग एक बेरिंग पे फटिंग एनालिसिस नहीं परफॉर्म कर सकते, वी आर नॉट एबल टू कंप्लीट एनालिसिस ऑन द सिंगल बेरिंग, नहीं पॉसिबल है। सो इन दिस केस इन अ बेरिंग वी आर डूइंग इन अ सेट, सो सेट में से 90% बेरिंग कंप्लीट होता है लाइफ, सो दैट इज अचीविंग द 90% ऑफ द बेरिंग क्राइटेरिया। यदि उसमें से 85 किया तो हम लोग बोलते हैं एवरेज लाइफ क्राइटेरिया सेटिस्फाई किया है। तो एवरेज लाइफ क्राइटेरिया जो है वो बहुत रेयरली यूज होता है। Nowadays all industries are using this life 90% ऑफ बेरिंग क्राइटेरिया जो है उसको यूज करते हैं। जो भी ये क्राइटेरिया है तुम्हारा लाइफ ऑफ 90% ऑफ बेरिंग क्राइटेरिया हर जगह पे यूज होता है। इसको हम लोग जो लाइफ 90% बेरिंग है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं L10 से, L10 से रिप्रेजेंट करते हैं। सर ये 90 किधर, ये 10 किधर, तो ये देखोगे तो 90 + 10 100 होता है। ओके, सो वी आर गोइंग टू प्लॉट दी वन ग्राफ रिगार्डिंग दैट एंड विल गेट दी आइडिया व्हाई वी आर टेकिंग दी L10 फॉर द 90% ऑफ द लाइफ ऑफ द बेरिंग। जब भी हम 90% लाइफ ऑफ द बेरिंग के लिए बात करते हैं तो L10, तो ये मेरा मिनिमम रिक्वायरमेंट है टू चेक द डायनेमिक कंडीशंस कि भाई जो भी बेरिंग रहेगा वो मेरा ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना पड़ रहा है चाहिए। व्हाट इज दैट क्राइटेरिया, बेरिंग शुड कंप्लीट दियर 90%, जो रूल है मेरा 90% बेरिंग क्राइटेरिया वो सेटिस्फाई होना चाहिए। वो मैंने आपको पहले बोल दिया क्या है, 100 में 90 बेरिंग, आई एम जस्ट टेकिंग अ सिंपल एग्जांपल, आउट ऑफ 100 90 बेरिंग शुड कंप्लीट देयर रिक्वायरमेंट सक्सेसफुली विदाउट एनी एविडेंस ऑफ द फेलियर, दैट्स ऑल। एक भी एविडेंस नहीं रहना चाहिए फेलियर का, कुछ रहेगा तो हम लोग उसको रिजेक्ट कर देने वाले। सिमिलरली इन एवरेज लाइफ मेथड वी आर गोइंग टू चेक द बेरिंग स्लॉट if we have completed with the 50% of the bearing, मतलब 50 bearing completed their life successfully, so we can say this come under the average life criteria, and here we are going to represent that with the L50, इसको हम लोग L50 से represent करते हैं। okay, and in next lecture we'll discuss what is the meaning of L10 Weibull equation से। by the Weibull equation we are going to find out the relation between the reliability and life. So when you are going to talk about the relation between the reliability and life, that time we'll see why we are representing this 90% criteria by the L10 and why we are representing this
एवरेज लाइफ क्राइटेरिया बाय L50. ओके, आई होप किसी को कुछ डाउट है तो अभी पूछ लो. यस, इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट देन प्लीज आस्क. कुछ डाउट है किसी को? आई होप आई एम ऑडिबल. Yes, sir, you're audible. यस, ओके, किसी को डाउट नहीं है, सो नाउ यू कैन लीव द